At what time my presentation is take place? Sir, after Sinha sir completes his deliberation, your time will start and I'll read your profile and then I'll invite you. Okay, at around 1:30? Yeah, I think because 1 hour to one speaker. And sir, So I request you to please give concluding remarks also because sir has to leave. Concluding remark of the whole session. Whole session. Yeah, at yeah, the yeah. end. At the end. At the end. At what After time? 4 o'clock? No, when you complete your deliberation, after that only. Okay. Because okay. audiences may have question answers. So okay. Because I have chosen the very wide subject. Okay, fine, sir. Capacity program and training. Okay, so sir. I concentrate on skill development in higher education, and I will give you the idea to the students and the teachers about the 2 training program or sponsored by ICSSR from last 25-30 years. And with the help of this training program, a good number of research scholars produced by ICSSR. And there are 27 ICSSR sponsored institute in the country. And they provide the skill development and training program to the not only the research scholar, but to the teachers also. And the idea behind is that first one is that to the research scholar, because they are doing research for their award, that is PhD award. And the second one is for the guide. Okay. Second one is for the guide. So for the guide, we provide information, we provide knowledge to update his or her knowledge. So that he or she pass on his or her updated knowledge to the PhD student. Okay, so these are the 2 training program which is more or less useful to the entire social science and the humanity background faculty. So I will talk about this. Yes, sir. Sir, it's a pleasure to have you because it would be very beneficial, I feel. So I think it is 12:45. We should start with this. Yeah. Good afternoon, all. I, Pamela Nima, Assistant Professor, Department of Humanities from Sri Vaishnav Institute of Social Sciences, Humanities and Arts. Welcome you all in the first plenary session of this interdisciplinary conference, UDGAM 2021. On behalf of Sri Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya, I welcome former IAS officer from Bihar, Senior Advisor and Mentor Sri Anil Kumar Sinha, and Associate Professor, Center for Social Studies, Veer Narmad University, Surat, Professor Vimal Trivedi, the next speaker of the session. I also welcome delegates, faculty members, and students in the first plenary session of UDGAM 2021. Shri Anil Kumar Sinha has been a founder vice chairman of Bihar State Disaster Management Authority in the rank and status of Cabinet Minister of Government of Bihar, Patna. In his capacity to this post, he established the ethos of the organization, lending to its vision and goals. Shri Sinha has extensive experience and knowledge relating to disaster risk reduction, including issues of environment and climate change with public policy analysis and programming. As Joint Secretary in charge of disaster management in Government of India, he handled major disasters as Orissa Super Cyclone 1999, Bhuj Earthquake 2001 in Gujarat, and several others. He was Member Secretary, High-Powered Committee on Disaster Management set up at the behest of the Prime Minister then. He also founded prestigious National Institute of Disaster Management, Government of India, at the national level, and International Recovery Platform, UNDP in Kobe, Japan, at the global level. In recognition to his exemplary services, he was handed over key to the city of Kobe on behalf of Governor of Hyogo Prefecture in Japan. So we are really obliged to have you as our plenary speaker. So I invite Shri Anil Kumar Sinha
as our first plenary speaker. I hand over to you, sir, the session. Okay, namaste and good morning. I think a good afternoon ho gaya hai. Professor Pamela Nima, Professor Vimal Trivedi, Dr. Santosh Dhar, and other eminent participants in this wonderful program of UDGAM 2021 of Shri Vaishnav Vishwavidyalaya. I really feel honored and privileged to have been given this opportunity, and I'm really thankful to everyone, all the Vice Chancellor, Chancellor, and all of you, especially Professor Amit Joshi, who has been in touch with me. I think coming to the subject to see, I think it's a very good initiative on the part of the university to take up the topic of imagining higher education in social sciences and humanities and arts, journalism and media, you see. I think the higher education institutions, universities downwards, they have tremendous role to play in the current context, you see, and the emerging, times and the emerging challenges. They will really have to come forward and they will have to take the leadership, this is what I want to say right in the beginning. Now, since I will be speaking mainly from the perspective of disaster management, disaster risk reduction, so I was going through, your UDGAM brochure, you see, and I'll come to that as to how I want to connect with what you are doing and with my work and my experience. But before that, I think it will be important to remember and mention that right now we are still in the midst of one of the worst disasters which the humankind has faced. We may say century, 2 centuries and all that, but it is definitely pandemic, the COVID pandemic, which has affected the whole world, you see, for last 2 years. And we are still not out of it, which is so very unfortunate. And we are every day seeing new variants of that. I think latest is something called Omicron, which has again sent shock waves, and panic waves throughout the world, you see. We can see the reactions of the government of UK, in Italy, USA, and many other countries. South Africa, of course, they seem to be quite affected by this, you see. Now, this pandemic, the way it happened, it happened in a furious manner, in a very intimidating manner. The best of governments, the strongest of economies, the most advanced of the countries, you see, also got severely affected and impacted by this, you see. And all of them were challenged. Not only our country, but all of them were challenged. And the first wave, the lockdowns, during the first wave, then the second wave, which was very, very deadly. I suppose it didn't leave anyone untouched, very, very unfortunately. And now, as we were feeling, or globally there was a feeling that we are getting out of it, suddenly we have this new variant to see. Fortunately, the news till now is that even though it is highly transmissible, but in terms of impact, I think it is not so deadly, which is a silver lining. But let us, right now, one is keeping their fingers crossed, because I don't think the scientific community or the WHO or our ICMR, they have come with the kind of last words on this kind of a variant. Now, today being 3rd December, also reminds me of a big disaster which took place in your neighboring city of Bhopal, you see. On 3rd December 1984, I remember, I think, yes, I was in Government of India. I had just come on deputation to Government of India from Government of Bihar, and you had one of the worst tragedies, one of the worst industrial disasters in the world, the Bhopal gas tragedy. And I'm not going into numbers, but if I remember, while the official numbers may be small, but the non-official numbers were very large.
And the most unfortunate part of that was that, the impact of Bhopal gas tragedy, the gas leak, has been felt in the last 20, 30 years over generations, generations after generations, which is the worst part, again, I hope other disasters and what we have observed, other disasters do not leave. They impact, they kill people, they destroy buildings, infrastructure, and all that. But they don't really leave that kind of a genetic impact over the generations, which is so terrible. If we count stories relating to that, I think one needs days and days together. But why I mentioned this is, one is that it happened in India, it happened in your own state of, beautiful state of Madhya Pradesh, very near, to a beautiful holy city of Indore, where all of you are located. But then there is a lesson to be learned from that, which I must highlight right in the beginning. You see, when we talk of thousands of people who got killed and who got impacted and their generations affected, how many of us we realize, including especially the students, who are going to be the leaders of tomorrow. And that is not saying something, just like that. It is obvious, we were the students 30 years back, 50 years back, and today we have been in certain positions. We have discharged our duty towards the society and the nation, etc., etc. There was one simple thing which could have saved the lives of thousands of people. One can talk, there can be discourses on Bhopal gas tragedy, all aspects of that. But one simple thing, I don't know how many of us we realize, if you, during that time when the gas leak happened, and then people were realized and they were running helter skelter, there was all confusion, panic, unfortunately. No one told, neither the United Carbide Company, nor the district administration, unfortunately, nor any other institution or government of India, etc., that if you have a cloth or you have a handkerchief, just wet it, इसको पानी में भिगा लीजिए और इसको आप नाक पर, अपने नाक पर रख लीजिए, अपने मुंह पर नाक को कवर करके। अगर इतना ही किया होता तो उसका असर ये है कि जो गैस है वो that would have been absorbed considerably by the water in the, अगर आप तौलिया यूज कर रहे हैं, आप रुमाल यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, चादर है, साड़ी है, कुछ भी चीज है, तो उसमें ऑब्जर्व हो जाता है और उसका जो लीथल इफेक्ट है वो लोगों के सिस्टम तक नहीं पहुंचता। जस्ट अगर इतनी चीज हमें या कोई बताता या हम जानते और ये जो डूज एंड डोंट्स हैं वेरियस डिजास्टर्स के, दे आर नॉलेज, व्हाट टू डू, do's and don'ts, they are knowledge part. And there is another part of it which is called how to do, which is the practice part, which is the rehearsal part, which is doing it again and again. क्योंकि जब डिजास्टर होता है, मैं आपको शुरू में बताना चाहता हूँ, 9/11 से आप लोग सबको फेमिलियर हो। 9/11 which happened in USA, and the World Trade Towers, 2 of them, they were hit by aeroplanes and they were destroyed, one after the other. पहला हिट हुआ, उसके बाद दूसरा हिट हुआ। पता नहीं आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, पहले और दूसरे के हिट होने के बीच में 18 से 20 या 22 मिनट का अंतर था। जो सेकेंड बिल्डिंग था उसमें उसका एक केस स्टडी टाइम मैगजीन में कई साल पहले वो पब्लिश हुआ था, बट वो इतनी अच्छी चीज है कि हम उसको अक्सर हमेशा बात करते हैं। सेकेंड बिल्डिंग में 73rd, 74th, 75th फ्लोर में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ 5th, 6th, 7th फ्लोर, बट 70, 72, 74 की बात मैं कर रहा हूँ। मॉर्गन स्टैनली जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है, उनका ऑफिस 3 फ्लोर में था और उनके 3000 एम्प्लॉइज थे। उन 3000 एम्प्लॉइज में से, जैसा केस स्टडी कहती है, थोड़े बहुत फिगर्स
अलग अलग जो स्टडीज हुए हैं या रिपोर्टिंग हुई है उसमें अलग है, बट मोटा मोटी बात यह है कि 2993 2993 employees of Morgan Stanley, they came down not by lift, because lifts are not allowed to function. A lift became dysfunctional immediately. They came through stairs. 70वें 72वें फ्लोर से नीचे तक आए, एंड 2993, ये तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का है, वो सेफली नीचे तक आ गए। तो वो बाकी 7 लोग कौन थे जो कि मारे गए? तो 7 लोग में 6 लोग थे जो कि कैजुअल विजिटर थे, उन्हें पता नहीं था व्हाट टू डू इन सच ए सिचुएशन। और 7वां कौन था? 7वां वो व्यक्ति था जिसने ये कहानी बनाई एक तरीके से। उसका नाम था रिक रेस्कोरला। आप अगर गूगल में जाएंगे, अभी मत जाइए, बाद में 9/11 केस स्टडी ऑफ मॉर्गन स्टैनली इतना भी लिखेंगे तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। रिक रेस्कोरला जो सिक्योरिटी का इंचार्ज था, उसका बेसिकली ये जब से उसने ज्वाइन किया तो उसने अपने डिसिप्लिन एंड जो भी प्रोटोकॉल्स थे उसको लागू करना शुरू किया। वहां पे उनके कलीग जो हैं वो उससे बड़े नाराज रहते थे, उसको डांटते थे, कहते थे कि तुम्हें समझ नहीं है, तुम सिक्योरिटी आदमी हो, आवर एवरी मिनट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। नेचुरली ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है तो उसके लोग दे आर ऑपरेटिंग एट दैट लेवल कि एक एक मिनट में उनके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का काम होता है इसे। बट रिक रेस्कोरला वुड से नथिंग डूइंग, यू बेटर फॉलो माई डिक्टेट। और हम लोग के यहाँ तो कल्चर अलग है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाइए और मान लिया कि वो कई स्टोरी का बिल्डिंग है या नहीं है, कोई कहे जा करके जो टॉप बॉस हैं, CMD हैं, सेक्रेटरी हैं कि सर आज ये मॉक ड्रिल होना है, तो कहें कि ठीक है जाओ बेटे कर लो, मैं तो ज़रा बिजी हूँ, देख रहे हो मेरे टेबल पे इतनी फाइल्स हैं, ठीक है कर लो, मेरे को आके बता देना कि कैसे। बट US में ये कल्चर नहीं है, और कंट्रीज में, जापान में कल्चर नहीं। वहां पे जो व्यक्ति इंचार्ज है किसी चीज का, ही हैज द लास्ट वर्ड, ही और शी हैज द लास्ट वर्ड। तो वो कराता था सारे प्रोटोकॉल्स, और यही कारण था कि मॉर्गन स्टैनली के एम्प्लॉइज दे न्यू कि अगर कोई ऐसा क्राइसिस होता है, डिजास्टर होता है, तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और वो उन्होंने किया। और रिसर्च में मैं खास करके रिसर्च बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया के बहुत सीनियर डीन, फैकल्टी, स्टूडेंट सब आप लोग हैं। आई कैन सी देयर आर total 64 of you right now, so it is important to connect it to the research also. रिसर्च में क्या बात निकल के आई, यू सी, कि जब कोई क्राइसिस होता है तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, हम लोग अब सब रिस्पॉन्ड करते हैं। सडनली अभी आपके पास कोई भगवान नहीं करे आग लग जाए, जोर से धरती हिलने लगे और कुछ हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, तो हम तो सब रिस्पॉन्ड करेंगे। बट सवाल ये है कि हम और आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो उसमें रिसर्च में ये निकल के आई कि देयर आर थ्री पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमंस। पहला, एंड इसको डिजास्टर पर्सनालिटी वर्ड दिया, तो पहला डिजास्टर पर्सनालिटी, द फर्स्ट पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स इज जिसमें लोग फ्रीज कर जाते हैं। सो यू फ्रीज फिजिकली, यू फ्रीज मेंटली। If you freeze mentally, you are unable to think, you are only a mute spectator, you freeze physically also। और अगर कहीं पे चीजें गिर रही हैं, कोई चीज फेंका रहा है, one is coming like a bullet, you know, चाहे कोई भी चीज हो, तो you will get hurt because you have frozen and you are unable to take action। Second personality ये होती है, रिसर्च में आया, of those people who panic। लोग इतना पैनिक कर जाते हैं, रैशनैलिटी अपना छोड़ देते हैं, कि आपने शायद कभी कभी वीडियोस देखा होगा जिसमें 30वें 40वें 50वें फ्लोर से लोग अपने पार्टनर का, फ्रेंड का हाथ पकड़ के और कूद जाते हैं। तो उस पैनिक में कूद गए, बट उसके बाद जो होना है वो तो होना है, you know, you are gone, you see, in a minute, you see। But fortunately the research says there is a third personality pattern also, disaster personality 3, and 3 is of those people who know what to do and who also know how to do। And as I said, what to do is knowledge, what to do is do's and don'ts। Fire
हो तो आपको क्या करना है, डक कवर रोल करना है, और अगर अर्थक्वेक हो तो आपको डक कवर एंड होल्ड करना है। ये छोटी छोटी चीजें जो है, दैट इज डूज एंड डोंट्स, यू नो। और जो मैंने भोपाल गैस ट्रेजरी के लिए बताया, दीज आर डूज एंड डोंट्स, कि ये करो ये नहीं करो। आप इधर से गैस आ रही है, आप उस साइड तो नहीं भागेंगे, आप उससे दूर भागेंगे, यू नो। सो सिंपल डूज एंड डोंट्स। तो दोनों चीज है, यू हैव टू हैव द नॉलेज एंड यू मस्ट हैव द प्रैक्टिस हाउ टू डू, which means practice, 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 rehearsal, regular rehearsal, you see, come what may, this must be the culture। और आप जब ये करेंगे तभी आप उस इमरजेंसी के समय, जबकि सडनली समथिंग इज हैपनिंग, एनीबडी कैन लूज द रैशनल, लेकिन अगर आप ये करते रहे, आपको पता है, तो यू विल बी एबल टू मेंटेन योर बैलेंस। और ये चीज मैंने पर्सनली फील की, हमने जापान में भी रह करके काम किया है, वहां पर कई साल हम रहे हैं, हम उस अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सबों को, जितने स्टूडेंट्स हैं, पैनलिस्ट हैं, आप में से इमिनेंट सीनियर स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि साहब आपको कौन सी डिजास्टर पर्सनैलिटी बनना है, 1, 2 या 3। नॉर्मली हम कहते हैं यार नंबर 1 बन, बट इस चीज में इट इज नंबर 3, यू नो। Those who know what to do and how to do, they can save themselves. That is what happened in the second tower, the case of Morgan Stanley. So friends, I just thought I'll share this piece of research, and you can, as I said, you can Google and find it and go through. There's a lot to learn from these things. अब मैं ये देख रहा था, जो कि आपका ब्रोशर है और आपके यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने वहां पर देखा कि आई मीन योर यूनिवर्सिटी वेरी राइटली वांट्स टू बी लीडर इन शेपिंग बेटर फ्यूचर। जो डिसिप्लिन आपने चुना है, उसको मैं देख रहा था कि इनमें से कौन सा डिसिप्लिन है जो डिजास्टर मैनेजमेंट से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। मुझे कोई भी डिसिप्लिन नहीं मिला जो कि नहीं कनेक्टेड है। एवरी डिसिप्लिन विच यू हैव, एवरी डिपार्टमेंट विच यू हैव, लाइक इंजीनियरिंग, लाइक फोरेंसिक साइंस, लाइक आर्किटेक्चर, लाइक मैनेजमेंट साइंस, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब मैं आपको बता दूं कैसे। engineering, civil engineering and chemical engineering, many other engineering, electrical engineering, they're all directly connected. Civil engineering with safe construction of the buildings. नहीं तो earthquake में it is said that, you know, earthquakes do not kill. If earthquakes do not kill, then what kills? It is the unsafe, it is the buildings that kill. Or buildings, maybe not all buildings kill. It is the unsafe buildings that kill, you see. और अनसेफ और सेफ बिल्डिंग्स कौन बनाते हैं भाई? तो सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं, आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं, इसलिए आपका आर्किटेक्चर भी उससे उतना ही कनेक्टेड है, यू नो। एंड जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, दिस इज मेड बेसिकली फॉर द इंजीनियर्स एंड फॉर द आर्किटेक्ट्स एक्सेट्रा, सो दे आर डायरेक्टली forensic science, you see, just to understand the details of, you know, various things which are happening. You see, debris जितना हो जाता है उसका मैनेजमेंट, forensic science comes into all that, you see. Architecture, management science, it is all disaster management, how we can manage, you see, you know. So therefore management science का तो बहुत बड़ा रोल है। उसी social science, उसी psychosocial trauma हो जाता है, लाइवलीहुड अफेक्ट होता है, कितनी चीजें अफेक्ट होती हैं, जिसमें कि फिर सोशल साइंस का एंगल, बच्चे लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं, हमारे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, एल्डरली लोग हैं, दे ऑल कम विद इन द एम्बिट ऑफ द सोशल साइंसेज। फिर जर्नलिज्म जो है, तो जस्ट 1 मिनट प्लीज। हाँ संजू। पापा हम लोग 2 मिनट पे टावर, 2-3 मिनट पे टावर 2 के नीचे होंगे। अच्छा ठीक है, हमको 5 मिनट दो तो हम आते हैं। ओके, या तुम लोग ऊपर आ जाओ। ओके। तो इसमें आई थिंक आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑब्वियसली, सो एवरी डिपार्टमेंट ऑफ योर्स इज कनेक्टेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टली। देन मैं ये देख रहा था कि यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यू नो, विच इज द सोर्स ऑफ व्हाट द यूनिवर्सिटीज डू, देयर ग्रांट्स, their guidelines and their policies etc. UGC का आपका लेटर है 4-10 अक्टूबर 2017 का, एक सेक्रेटरी थे पीके ठाकुर, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग में बॉम्ब थ्रेट है, अर्थक्वेक है, एक्सप्लोजन है, हैजर्डस मटेरियल का स्पिल है, रिलीज है,
कैंपस में शूटिंग, जो कि हम लोग के यहाँ तो फॉर्चुनेटली कम होती है, बट देखिए यूएस में कितनी होती रहती है, टेररिस्ट अटैक है या फिनेंशियल इमरजेंसी, ये तो कुछ चीजों इन्होंने मेंशन किया। और ये बात तब है 2017 की, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है इसी। तो इसीलिए, लेकिन व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट कि यूजीसी का क्लियर कट डायरेक्टिव है, और फिर 2012 में भी उसके पहले गया था कि हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल पेपर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल होगा, और दूसरा ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स में एक टॉपिक होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब ये चीजें थोड़ी आउटडेटेड हो गई। अब हम समझते हैं कि इससे ज्यादा जोर है, और जो लेटेस्ट इस संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग को सबों को समझना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स 10 पॉइंट एजेंडा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में उन्होंने 10 पॉइंट एजेंडा दिया रिलेटिंग टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। वैसे तो बहुत से ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हैं, सेंदाई फ्रेमवर्क है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, पेरिस एग्रीमेंट की बात हम लोग पहले करते थे, अब COP26 हो गया ग्लासगो में, अब उसकी बात हुआ करेंगे कि भाई उसमें किसने कितना कमिट किया, क्या टारगेट्स वगैरह हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा 10 पॉइंट एजेंडा दिया था, इन एडिशन टू द पॉलिसी जो कि 2009 में आई थी, जिसमें कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है उसके बारे में काफी बात की गई, एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात की गई, सारी चीजें। तो प्राइम मिनिस्टर ने, मैं उसमें से 2-3 चीज जो आपको बताना चाहूंगा। एक तो वो कहते हैं कि सब सारे डेवलपमेंट सेक्टर्स, और एजुकेशन तो वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट सेक्टर्स है, एंड इट्स ए लीडरशिप सेक्टर, यू सी, उसमें भी होना चाहिए। एंड रिस्क कवरेज जब हम करते हैं कि रिस्क का, तो छोटे से छोटा हाउस होल्ड जो है, और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इंडस्ट्रीज के, उससे लेकर के मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तक रिस्क कवरेज करना चाहिए। आप किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि डिजास्टर्स में हमने तो आपको ग्लोबल कंपनी का आपको एग्जांपल दिया। जब भुज में अर्थक्वेक हुआ था तो सीमेंट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सॉल्ट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्री, गैस जो रिफाइनरी थे वहां पर, वो सारी चीजें अफेक्ट हुई थी। तो देयरफॉर बिजनेस का पूरा सेक्टर। देन तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जिस पर हमेशा बहुत जोर देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हम लोग को सबको उसको आत्मसात करना चाहिए, विमेन लीडरशिप एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ विमेन इज सेंट्रल टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो हम लोग को मानना चाहिए, लेकिन हमारी ये समझ है कि ऑल डिजास्टर मैनेजमेंट बिगिंस एट होम। मैंने जापान में रह करके देखा है, मैं अभी डॉक्टर नीमा को बता रहा था कि छोटे छोटे बच्चे जो वहां हम लोग देखते थे, सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अगर उनको जो स्कूल जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, तो वो सड़क को जैसे हम लोग क्या होता है दौड़ते हुए सडनली पास कर गए, बिना बाएं देखा बाएं और दाएं देखा, वो नहीं होता। वो बच्चे आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रुकेंगे किनारे में, बाएं दाएं देखेंगे, दे विल अश्योर, वो ये अश्योर हो लेंगे कि भाई कोई ट्रैफिक नहीं है, तब वो जाएंगे, फिर मिडिल जो पोर्शन है रोड का वहां पर रुकेंगे, फिर बाएं दाएं देख लेंगे उसे। उनको पता है कि कौन सा डायरेक्शन देखना है, क्योंकि वहां पे जो जो ट्रैफिक का डायरेक्शन उसको देखते हैं। बट मैं ये बता रहा हूँ कि दे आर सो सर्कम इंस्पेक्टिव कि वो देख लेंगे, अश्योर कर लेंगे, तभी वो क्रॉस करेंगे। हम लोग के यहाँ कहीं भी ड्राइव कर लीजिए, गांव सब जो है सड़कों के बगल में बसे हुए हैं, सड़क जो है बच्चों के लिए आंगन के जैसे हैं, और बच्चे लोग इस तरीके से भागते रहते हैं, और देखिए उसमें कितनी डेथ्स होती है। अगर हम रोड एक्सीडेंट की बात करें तो रोड एक्सीडेंट में हमारे देश में एक साल में जितनी मौत होती है 1.5 लाख के करीब, उतनी सारे डिजास्टर्स को अगर आप मिला लीजिए, साइक्लोन मिला लीजिए, अर्थक्वेक मिला लीजिए, लैंडस्लाइड मिला लीजिए, प्रेसिपिटेशन मिला लीजिए, अभी देखिए साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, कितनी बारिश हो रही, सारी चीज, तब भी उतने डेथ्स नहीं होते हैं। हर मिनट में एक एक्सीडेंट होता है, और हर चौथा एक्सीडेंट जो है वो फैटल होता है हमारे देश में। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए जब घर से अगर किसी चीज को बिगिन होना है, देन वी नो हु इज द इंचार्ज। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, बट विमेन दे आर दी एट द सेंटर। एक विमेन को आप बताइए तो पूरी फैमिली जो है उसमें वो एजुकेट कर देंगे।
देन लीवरेज टेक्नोलॉजी, ये एक पॉइंट है। मैं सारे पॉइंट्स को PM 10 पॉइंट एजेंडा आप देख लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका तो टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर है, सारी चीजें हैं। देन नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड हायर लर्निंग्स टू वर्क ऑन डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज, ये पॉइंट 6 है। इट इज टोटली डिवोटेड टू एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। फिर एक चीज जो बहुत अच्छी है, 7th पॉइंट, और जो आपके सबसे रिलेटेड है, कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय सोशल मीडिया एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये भी चीज है। फिर जो लोकल कैपेसिटीज एंड इनिशिएटिव्स हैं, उसको हम लोग को हार्नेस करना चाहिए, and there should be every opportunity should be taken to learn from disasters and carry on studies on the lessons learned। और ये चीज अगेन यूनिवर्सिटी के लिए, these are great areas of research। अगर हमारे फैकल्टी और जो स्टूडेंट्स हैं सोशल साइंसेस के या इंजीनियरिंग के या आर्किटेक्चर के, कंप्यूटर साइंस के, वो इन चीजों को स्टडी करें कि साहब जापान में 2011 में ट्रिपल डिजास्टर हुआ, और हमारे यहाँ जो है 2001 में, तो अभी तो एक का 20 साल हुआ, जो भुज में हुआ अर्थक्वेक, और जो जापान में हुआ उसका 10 साल हुआ। अब दोनों अर्थक्वेक थे, एक से सुनामी भी हो गई, इत्यादि इत्यादि, और न्यूक्लियर जो प्लांट्स थे वो अफेक्ट हुए। तो ये दोनों डिजास्टर की कंपैरेटिव स्टडी अगर करें तो इतनी चीजें सीखने को निकलेंगी कि वो बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज होगा इससे। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जैसे साइक्लोन्स होती रही हैं, आपने सबने सुना होगा सुपर साइक्लोन जो 99 में हुआ उड़ीसा में, उसके बाद फाइलिन हुआ, हुदहुद हुआ, फनी हुआ, और क्या क्या नहीं, अभी फिर साइक्लोन बिल्डअप कर रहा है। तो इन सब से अच्छा, वेस्ट कोस्ट में भी, महाराष्ट्र, गुजरात, उधर भी साइक्लोन का अब इंसिडेंट्स हो रहा है। तो इन सब चीजों में रिसर्च करना और कंपैरेटिवली देखना कब क्या किया, ये देखना कि साहब नेपाल में अर्थक्वेक से डील करने के लिए किया जाता है, या सुनामी वैसे श्रीलंका में क्या किया जाता है, बांग्लादेश में बहुत काम हुआ है कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट पर, और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या एशिया में या पूरे वर्ल्ड में, ये सब चीजें बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं रिसर्च के लिए। और जो कि आने वाले समय में जितना हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण एंड जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स मैं अभी नहीं दूंगा, टाइम कम है, मेरे को अब निकलना है, मेरी कुछ मजबूरी है, एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। तो ये सारी चीजें रिसर्च के बहुत अच्छे एरियाज हैं। दिन में एक आध और एक NIDM ने इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेटवर्क फॉर DRR किया। I am only mentioning that. I hope that your university is a part of that. You see, देखिए स्टूडेंट्स, they are the youth power, they can be volunteers, से मतलब देखिए दूसरे कंट्रीज में वॉलंटियर्स कौन है, हम लोग वॉलंटियर सोचते हैं तो हम चौकीदार का सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है, जापान में देखा है, यूरोप में देखा है, हम और आप वॉलंटियर्स हैं, प्रोफेसर्स वॉलंटियर्स हैं, इंजीनियर्स वॉलंटियर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स वॉलंटियर्स हैं। बिकॉज क्राइसिस के सिचुएशन बड़े स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत होती है उसके सारे के सारे मैनेज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स एज ए यूथ पावर एंड एज वॉलंटियर, दे कैन बी वेरी दे हैव ग्रेट रोल टू प्ले। और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो इससे फर्स्ट रिस्पॉन्डर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। देखिए गवर्नमेंट कहीं भी पहुंचेगी वो तो ठीक है, आज घर में कहीं हम और आप रहते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान नहीं करे, लेकिन आग लग जाती है, तो आग तो लगती छोटी सी है चिंगारी, लेकिन न्यूज बनता है भयंकर आग लगी। क्यों? कि शुरू में उसको निप इन दी बड जो है वो नहीं किया। तो अगर हमारे यूथ जो है वो इन चीजों को सीख ले, वो उस समय क्या करना है। फायर एक्सटिंग्विशर्स आप जरा देखिए आपकी यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ कितने लगे हुए हैं, क्या वो अपडेटेड हैं? ऐसा तो नहीं कि 6 महीने 2 साल 3 साल हो गया। ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप जाइए, तो मैं तो गवर्नमेंट में 40 साल रहा हूँ, यही होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं तो वो तो उसमें इतनी धूल पड़ी हुई है। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, आमरी एडवांस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में आग लग गया,
बच्चे लोग मारे गए, पेशेंट्स मारे गए। डबवाली में स्कूल में आग लग गई, बच्चे लोग मारे गए। कुंभकोणम में तमिलनाडु में आग लग गई, बच्चे लोग उसी स्कूल में मारे गए। तो ये तो बहुत ही दुखदाई। उपहार सिनेमा में तो हर जगह आग लगती रहती है। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे यूथ ये प्रयास करें कि नहीं भाई, और आपका यूनिवर्सिटी ये डिसीजन ले कि आपके यहाँ हर कोई, एवरी स्टूडेंट से लेके एवरी स्टाफ, ड्राइवर हो, चपरासी हो, टू दी ऑनेबल, और मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ चांसलर है, वाइस चांसलर है, वो भी इस चीज को अपना ले। क्योंकि देखिए, डिजास्टर तो अगर आएगा, भगवान नहीं करे आए, तो किसी को बख्शता नहीं है। उसका जो इम्पैक्ट है वो ठीक है, गरीबों पर ज्यादा पड़ता है क्योंकि उनके पास सेफ्टी नेट नहीं है। हम और आप हैं, हमारे सेफ्टी नेट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, कोई अल्टरनेट फ्लैट होगा, कोई और नहीं होगा तो हम किसी रिलेशन के यहाँ, दोस्त के यहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो ऐसे लोग हैं जो डे टू डे अर्निंग करते हैं, उनके पास ये चीजें नहीं है, है ना, सेफ्टी नेट ही नहीं है। तो इसीलिए इन चीजों का जानना ये बहुत जरूरी है। तो जो वेल ट्रेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड अवेयर यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, दे आर ए ग्रेट कैपेसिटी। अगर आपके यहाँ सारे स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड हैं, ट्रेंड हैं, अवेयर हैं, तो दे आर ए ग्रेट कैपेसिटी। आई एम श्योर एवरीवन ऑफ यू विल एग्री। और अगर नहीं है ट्रेंड, देन दे बिकम वल्नरेबल ग्रुप, दे ऐड टू द वल्नरेबल ग्रुप, यू नो। सो द कंट्रास्ट इज टू मच, देयरफॉर देयर इज एवरी रीजन कि हर कोई जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो मैंने कहा कि व्हाट टू डू नॉलेज एंड हाउ टू डू तो आपका प्रैक्टिस है, बट व्हाट टू डू नॉलेज जो है वो तो पूरा आज अवेलेबल है, आप इसको उठाइए, इस पर अवेलेबल है। तो इसके बाद मैं अब एक बात करके, अच्छा, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें भी इन चीजों का समावेश है, मैं उसमें जान नहीं रहा हूँ। कम्युनिटी इनिशिएटिव को, जैसा हमने कहा कि गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है, लेकिन कम्युनिटी को भी अपना करने की जरूरत है। हम बच्चे को किसी स्कूल में भेज रहे हैं, उस स्कूल का बिल्डिंग सेफ है कि नहीं, ये तो डिसीजन हमें लेना है, तो गवर्नमेंट को नहीं लेना। हम किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप कहें कि सर लेकिन इसमें चॉइस कहाँ है, तो चॉइस ये है कि अगर हम जिस स्कूल में बच्चे को ले जाते हैं, अगर हम वहाँ के मैनेजमेंट को कहें कि हम आपके स्कूल में लाए हैं बच्चे को क्योंकि आपका स्कूल बहुत अच्छा है, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे बच्चों को एडमिशन दिया, लेकिन हमारे एक कंसर्न है, मैडम, सर, जो भी प्रिंसिपल है, कि साहब आपका स्कूल फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं कि नहीं, फायर सेफ्टी प्लान है कि नहीं, अर्थक्वेक प्लान है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन किस एरिया में है। तो ये सब चीजें अगर छोटी छोटी चीज हम इसको समझ लें और सीखें और अडॉप्ट करें, प्रैक्टिस करें, अपने एजुकेशन को ये प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है लाइफ का उससे जोड़े, तो हम समझते बहुत अच्छा रहेगा। और कम्युनिटी लेवल पर जैसे आज जोर दिया जा रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं कि भाई हर कोई एम्प्लॉयमेंट मांगे नहीं, बट कि कहे कि आओ भाई मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है। छोटे छोटे यूनिट्स आजकल स्टूडेंट्स ब्राइट जो है, यंगस्टर्स, वो सेटअप कर रहे हैं, जिसमें कि वो 10, 20, 30, 40, 50, सैकड़ों को भी डिपेंडिंग ऑन द स्केल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो कम्युनिटी इनिशिएटिव का भी बहुत बड़ा रोल है। उसी संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का एक छोटा सा कम्युनिटी इनिशिएटिव है कि हम जानते हैं कि जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो लेबर हैं, जो आप दूर दराज के एरियाज हैं, वहां तक उतनी पहुंच नहीं हो पाती है। आज डिजास्टर की बात सब कुछ होते हुए भी उतना डे टू डे डिस्कोर्स नहीं है। कोई टीवी चैनल डिजास्टर की बात नहीं करता, गवर्नमेंट चैनल्स भी उतना बात नहीं करते हैं, और ये एक आध बात महीने में करने में नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग का छोटा यह प्रयास है कि हम लोग एक मैगजीन निकाल रहे हैं, नो डिजास्टर्स मैगजीन, और इसका बाईलाइन है मेकिंग डिजास्टर्स एवरीवन्स बिजनेस बिकॉज एवरीवन इज अफेक्टेड बाय इट। और ये मैगजीन है, ये जर्नल नहीं है, क्योंकि जर्नल तो आपका एरिया है, आपके पास फैकल्टी है, आपके पास लर्नर लोग हैं, सारे लोग हैं, तो इसीलिए यू नो वो तो आपका एरिया है। लेकिन हम ये निकाल रहे हैं फॉर कॉमन मैन एंड द सिटीजन्स। तो ये हम शेयर करेंगे, जो इसका सॉफ्ट कॉपी है प्रोफेसर जोशी से एंड प्रोफेसर पामेला नीमा से हम शेयर करेंगे, विद दिस रिक्वेस्ट कि इसको आप जितने भी आपके फैकल्टी हैं,
सीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबसे आप शेयर करें। और आप सबों से हमारा ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि इसके आप एम्बेसडर बनिए, इससे आप जोड़िए, अपने परिवार को जोड़िए, अपने नेबरहुड को जोड़िए, इसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए। इसमें हिंदी का भी सेक्शन है। अगर हम इसे पूरे देश में ले जाना चाहते हैं तो नेचुरली सिर्फ इंग्लिश से तो काम नहीं चलेगा। अभी हिंदी का सेक्शन छोटा है, लेकिन हमें बहुत खुशी होगी यदि आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे और हिंदी में इसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपका ये उद्यम बहुत बहुत सक्सेसफुल हो। और आपने मुझे सुना। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much for your enlightening words. तो मुझे अनुमति है तो मैं अभी Yes, sir. निकलूं। सॉरी कि क्वेश्चन आंसर में मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन अभी अब मेरे पास समय नहीं है। जी, thank you so much, sir. Sir, you can leave. Sir, thank you. थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो Namaskar, मच, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। Thank you so much, sir. I feel honored to introduce you all with Professor Vimal Trivedi, Associate Professor, Center for Social Studies, Veer Narmad University, Surat. His areas of interest have been mainly research methodology, waste management, and environment issues and higher education. He is an experienced statistician with over 3 decades experience in analyzing and interpreting quantitative data. He is very knowledgeable in using statistical tools, SPSS, and methodologies. He provided consulting to teams as well as analysis and interpretation of more than 100 study data. He was project consultant and trainer in various departments and government organizations like ICSSR, New Delhi, state and private universities, and Ministry of Human Resource Development, New Delhi. He assisted more than 60 MPhil and PhD research scholars under the guidance and consultancy scheme of ICSSR. He has immense working knowledge of SPSS. He is mentor of SPSS for SPSS South Asia Pacific Limited, Bangalore. He was a course director of various national level training programs like computer application in social sciences, research methodology in social sciences, and orientation of social science research. He has over 25 years of experience in training, and he has developed his own concepts of conducting the most efficient trainings. He has completed 8 major research projects and published more than 30 articles in peer-reviewed journals. He published 2 books. The latest one is on skill development trainings and their impacts on scheduled tribe youths. Recently, he got 1 article published on impact of lockdown measures taken during COVID-19 pandemic on the livelihood of rag pickers, a case study in Surat, which has been published in Mainstream in September 2021. We feel honored to have Professor Vimal Trivedi as our next speaker. Over to you, sir. Yeah, thank you. Thank you, Professor Pamela. And good afternoon to everyone. I am audible? Yes, sir. You are quite audible. Yeah, Yes. Professor Pamela Dima and Dr. Amit Joshi and faculty member of Vidyapit Vishwavidyalaya, Indore, and webinar committee member, eminent speaker, delegates, and the participants. First, let me say thanks the organizer for inviting me to speak at the national level webinar at UDGAM 21 and for giving me the opportunity to talk about the importance of training and skill development in higher education. So it's a very wide subject, and I have to complete in 10 to 15 minutes. So I will speak some important points or cover important points. I would like to highlight the importance of this webinar, especially on the scope and relevance of the short duration training program and skill development in higher education. And I will highlight the future area. So I begin that effective educational setup must recognize, as my previous presentation also highlight this point, that academic quality and academician need to groom them as per the need of
hours in this global competitive era. As we know that academicians need a different skill, abilities and talents to excel in the diverse and dynamic education system. No matter how much knowledge teachers have, they need time, practice, guidance, and training to process the unique information to disseminate their reflective knowledge to the students. As you know that teaching and the research are highly correlated. So if you are a good researcher, then you impart the new knowledge and you can disseminate that knowledge to wider audience. So so the teachers are key player to build higher education, and so they require skill development or capacity building program to perform well as far as teaching is concerned or research is concerned. In brief, as mentioned the previous session, that why and how is important. In brief, why and how short duration training program is useful and what is the research skill. Research skill include concept of the research problem, hypothesis building, data collection, whether it's a primary or secondary, review of literature. Generally, we talk about the review of literature, and I have seen that most of the PhD students ask me that review of literature is a separate chapter or I will include in the first chapter. I always say that review of literature is not a content of the chapter. Review of literature provide you platform that whether your research process, whether your research questions are valid in your fieldwork, in your observational setup. So review of literatures give you immense information. Number one. Number two, and that is why people are now talking that review of literature is from last 10 years, last 15 years. Because we know that 20 or 30 years back, whatever the theory generated by researcher, and today it relevant or not. If it is not relevant and you have considered that in your review of literature, it may be backfire. I just give you one example that as we all know that 20 years back or 30 years back on Doordarshan, or you can see that in on NDTV, most of the cephalogists predict the considering the election data and predict the number of seats of particular party. That if a particular party gain 20 to 30% vote, then they will capture that much amount of seat. But now in last 5 to 10 years, you can see that either parliament election or legislative election, you can see that that theory is no more. Now that theory is altogether is different because number of characteristic is now you have to understand of the people mindset. So so review of literature is the key component for the researcher. It give you the idea of question. It give you the, for example, when you are doing when आप जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं और रिसर्चर ने लिखा है कि I have to do this, but because of time and because of budget and because of this, I have not considered this research question to understand. So आपके लिए ये important है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कि ये उन्होंने छोड़ दिया है, क्या ये this question या this area is feasible in my study area, in my fieldwork. So review of literature, in my opinion, is the first step for the researcher. So that kind of skill is important for the research scholar and those who are guide
for the research scholar. Secondly, important of skill development in higher education, apart from short duration of training for researcher, skill development should also integrate into the higher education, so that after completion of the student's graduation or post-graduation, student can get job, carry out project with the combination of knowledge and skill. So both short-term training program and the skill development, both are important in higher education. What are the benefit of the skill development? As we all know that skill development program will equip and train the youth with employable skill and knowledge, which only help them to contribute substantially in nation industrialization. But it also help to country's growth also. So there are two advantages. One is that particular students gain knowledge and gain benefit as far as industry is concerned. And the second one is increase our growth. So there are two. So you know that in July 2015, government launched the National Skill Development Mission. I don't want to go into details. So there are a number of paper or books already published on this. So why Skill India? I'm just give you some brief data. As per the census 2011 India is one of the youngest nation in the world. Over 62% of its population is aged between 15 and 59 years. Over 54% of the country's total population is below 25 years. It is estimated that average age of India's population by 2020 will range between 1 and 29 years. You can see that less than 30 years. In comparison, the average of population of US will be 40, whereas India is less than 29. But in USA will be 40, Europe at 46 years, and Japan has 47 years. So you understand that why skill development is important. So to give the training to youth that is less than 29 years old. So now I come to the subject. The scenario pertaining to the social science research at national level has been changing along with the shifting global economic milieu. As a matter of fact, if I go back to the 35 years back, so in 1985 onward, the country has witnessed a major shift in the mainstream development discourse, which envies diminishing role of state in social sector, including education, while encouraging and supporting private initiatives. For social science or humanity or to realize their potential in shaping public policy, it is imperative that the research ecosystem is dynamic and vibrant. The institution governing are robust and effective, and those produce quality research are strong and well governed. It is important to develop social science along with natural science by setting up Institute of Excellence for the twin intervened purpose of nurturing social scientists who could then work on developing theoretical formulation pertaining to specific Indian context and to meet and fulfill that and promoting and encouraging research endeavor. So as we all know, considering last 40, 50 years. So during the first 45 years of independence, the relevance and role of social science research and social scientists were considered to be a paramount importance, as the state had assumed the role of chief architect of a newly born nation and had opted for paradigm of social economic development through planning. So you can go through number of book, sages published number of book on this. One of the initiative was to develop social science along with national natural science by setting up Institute of Excellence for the twin intervened purpose of this. So my only concern is that
that how research scholar and the teachers get benefits from these research institutes. So Indian context and to meet and fulfill that and promoting and encouraging research and all, it is obvious that subject and area of research of that period were determined by the need of the time. Similarly, in the present context, capability in social science research will have to gear up in accordance with nature and demand of the development paradigm with and this. As the previous speaker already mentioned that how you look about the disaster management and the relevance research. So he rightly quote and giving the example. So social scientists and social science research need to remain relevant with the present day discourse, with its varied view, not only in terms of the preparedness for creating demand for social science research, but to dispel the changing scenario meaningful. So, so on one hand, it has to be taken into account that in the present context, social science as discipline of academic pursuit have been passing through critical time. Students in general are not opting for humanities and social science as first choice. As you know that those who are good in mathematics, getting 100 out of 100, they prefer to go in engineering. Those who are good in biology or this kind of subject, they prefer in medical. So in teaching, hardly students preferred by choice. So that is the only problem area in our education system. Scenario in both the sphere of learning and research, especially in the under and postgraduate college and university department in rural area, as well as small town and city where medium of instruction is vernacular language, is dismal due to lack of reading material as well as inadequacy of teaching tools and techniques. So research activity is carried out uh, uh, in lecture manner and devoid of any rigorous, primarily for the same set of reason. So I only focus that what is the role of research institute to, to provide the platform as far as skill development is concerned, or training, short-term training program for the research scholar is concerned. So teaching, therefore, has been based on more priority, and syllabus coverage has become the main focus in university or college. Research is linguistic at secondary and neglected stage, and although research work are carried out as an append and routine exercise at postgraduate level, as you can see that they learn research methodology in their postgraduate, but when they doing research for PhD award, they even don't know about the sample size, they don't know the population, they don't know the relation between sample and population. So that is my that is I this, and that is why I'm coming to my point. What is the role of short-term training program? And on the other hand, as I already mentioned, on the other hand, as a consequence of poor quality of research, these region remain obscure in terms of receiving less attention and coverage with the reference to the people deciding over there and their requirement. And hence, it is essential to strengthen and invigorate research capability of teachers and researchers of this neglected area. So methodology is the central, most crucial component element of any research program. Any researcher has to be well equipped and must have command over this tool. Otherwise, however well defined and well crafted the concept, question, and objective pertaining to the study may prove disaster in terms of operationalization and hence final output. So I also
say, if time permit, 5 minutes more. So even otherwise, continuous and ongoing discourse on methodology component of research in social science within community of social science is vital exercise, as there is always a scope of innovation in the sphere. Why I'm saying? Because one reason. For example, nowadays selective risk, I have seen, because I have given guidance and consultancy to more than 60 to 70 PhD scholars. So I can give a good example of what are the difficulty of the PhD students. Uh, so for example, nowadays selective reporting and misrepresentation of data is common in research outcome. What is selective reporting? So selective reporting, data manipulation, and false empirical finding leads biased academic publication, and it spoils the credibility of research. Unbiased, precise, without conflict of interest, and timely reporting of finding is key component of research. Due to internet, I also observed that 20 years back, you can go and see the library scenario. The library is full of students, and even from the social science or from humanities. आज लाइब्रेरी में बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि वर्चुअल लाइब्रेरी आ गया है, ई लाइब्रेरी आ गया है, गूगल स्कॉलर आ गया है. तो so that is the only this. And I have seen that. I'm just give you one example, that for good picture, students use pie chart. If you know that pie chart is very convenient chart for the researcher, and it's one of the visualized technique that is used to achieve the result. You must have seen that pie chart uses represent different proportion, such as showing, I'm just giving you an example, showing which political party voters are likely to choose. Now you can see, I'm just giving one example, that which political party likely to choose voters. But what if participants in a survey were allowed to choose more than one political party? If it is no, then your data is wrong, your projection is wrong, if you are considering whatever the chance, because you have not given chance to provide voter more than one answer. So this is the and that means researcher may end up with more than 100%. Presenting these on a pie chart is where it becomes tricky, because it is meant to show proportion of whole where each group is distinct. So, but here the group are overlapping. In this example. So in recognition of need, I'm just come to the main. In recognition of the need for reorienting and upgrading the research skill of research scholar of social science, ICSSR New Delhi introduced two types of social science program. One, research methodology for the PhD students, and the second one is capacity building program for the university and college teacher. You can say that skill development program. So what is research methodology program? This is a central and most crucial component element of any research endeavor in social science. So researchers has to well equip and command over these tools. So how this training program is important. So this training program blends social science, philosophy, theory, practical aspect pertaining to the research. The course will focus not only on the theoretical and philosophical dimension, as well as experimental upon which social research need to be based, but also varied practical aspect of the research that one encountered during various stage of conducting research, such as identify research problem, proposal writing, literature review, selection, report writing, publication ethics. Publication ethics is also important criteria which we generally
taught whole day. Whereas the capacity building program is different than the research methodology program, content-wise and duration-wise. This is a 2-week course. Earlier one, that is research methodology course, 10 days training program. Here is a 2-week course, and aim of the capacity program is to give an exposure to faculty, preferably assistant professor. Just they start guiding to PhD scholar in social science discipline to the latest advance in their subject, technological spin, etc., and to enhance their general methodology and writing skill. So as I already mentioned that nowadays people expert or good academician suggest that if you quote research literature, review of literature, then quote at least 10, 15, 20 years back. Don't quote 30, 40 years back. So this is a new development in research. The overall objective is to prepare academicians to become capable research in order to face current and future challenges of the education sector successfully. This is also one of the aims. Thus, it is the responsibility of the academic institute to upgrade the existing knowledge, skill of the faculty, also add current required information which are essential for the nation building. As we know that research is about creating a new knowledge, it is continuous process and require gradual process to achieve meaningful result for the benefit of society at large. So research progression require a logical, conceptual knowledge which is found lacking in the today's academic environment. To meet this challenge, it is necessary to train and equip the young faculty so that they can compile with the quality of standard of research education in their respective discipline. Considering these two aspects, skill development and short duration training program, Center for Social Studies Surat, myself and my colleague, Professor Kiran Desai, organizing training program from last 32 years. And the center has been organizing this training program. And so far, more than 500 young researcher, college and university teacher from Gujarat as well as other state of India have benefited this program. So this program has been designed to bridge the gap between theory and the practical approach. So you keep this thing, why training program is important. So you can get the idea that is the gap between theory and the practical approach adopted by the young academician in research progression. So, so under this, CS has also been actively involved in not only in training of teachers and research policy maker, but under the ICSSR guidance and consultancy scheme, center faculty member offer guidance to PhD scholar in designing research, refining methodology, analyzing the data. So, and it is a totally free of cost. You are not paying, ICSS are paying for researcher. So with this, I complete my presentation. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. The audience is welcome to put forward their queries, if any. You can raise your hand so that we can make you a panelist. Or you can put it on your chat box. Yes, sir. We are having the chat box also. Anyway, anytime they can ask me a question. Even you can note down my email ID. You can Yes, sir. send me Yes, your sir. query, or you can give my email ID and mobile number to all the participants if Yes, they sir. want to. So you please share your email ID so that
I Yeah. can type it in. My email ID is Vimal, VIMAL, Yes. Trivedi, TRIVEDEE, @ yahoo.com. Yes, sir. Shall I repeat? Sir, Vimal. VIMAL TRIVEDEE @yahoo.com. Yeah. And my mobile number is 91737 Yes. 123 Yes. 91. 12391. Okay. 91. So, Okay, sir. so anyone wants to know about the this, so you can just pass on the whatever the query you have, Okay. even about the research methodology or interpretation of result. You can. I am aware about the R and R Studio. I am aware about the Stata. I am aware about the SPSS. So So I request you to conclude the session in few words because we are having the technical session. yeah, It is So- awaited, said that's why. so I am just to conclude this. I don't want to conclude my presentation, but I conclude the previous one that that gentleman has two key component he discussed, and both are important. Both are important to me. First one is that how pandemic affected, and he opened up that how researcher look at this scenario, and he talk about the different personality. I if I am correct, that when he said that different personality means he talk about the how you raise the response, or how you look at the disaster, and second important aspect he discussed in detail, that what to do and how to do. These are the two important aspects. I agree with him that you, once you collect the data, the next question is what to do with this data. That is the important. Sometime what happened, that your objective, your hypothesis at one level, and your data is not supported. So he mentioned, and he has given the example of 9/11, and he also explained about the disaster management is nowadays is more relevant. He mentioned about that even in social science or in humanities, you can consider disaster management is one of the area. And I agree with him that in disaster manage, how people emotion stability decrease, and that is the core area researcher needs to examine. So with this conclude, I again thank you very much to all the seminar organization, and particularly Professor Pamela Nima and Dr. Amit Joshi. Thank you very much. And thank you so to much, the sir. participant for listening me. Thank you. So lastly, I thank both the speakers to enlighten us with their words of wisdom. So thank you all the audiences, and thank you all the faculty members to join us for this plenary session. Thank you all, and have a good day. Thank you. I request all the students to please join the technical session ahead with the given links. Thank you. Thank you, Vimal sir. Thank you so much.
Thank you, Shadab sir. Thank you so much. Alok sir.